쏟아받들리는 빗방울들이 땅에 떨어지는 소리 전해지는 전생고. Hi guys, so we just had this pasta and I'm boiling some for lunch. Okay, I'm trying to make like homemade pasta. और यहाँ पे I've also got some of the ingredients. Okay, थोड़ा सा focus हो जाओ. हाँ, I've got some of the ingredients which I'm going to add in my pasta. तो या अभी तो मैं इसको थोड़ा सा boil कर रही हूँ. देखते हैं कि कैसा होगा. It's on the verge of boiling. शायद थोड़ी देर में ये fully boil हो जाएगा. फिर उसके बाद मैं इसको पकाऊंगी. So ये रहा मेरा homemade pasta, entirely made by me. मतलब उतना अच्छा तो नहीं होगा, but then you know, still I made something, okay. And yeah, now I'm going to eat it. Good morning. It's another lovely day. Yeah, मैं ना ये मतलब जो मार्च का weather है, I've been really loving it because you know the weather is starting to get warmer. तो बहुत अच्छा लग रहा है कि you know weather फिर से warm हो रहा है करके. But I'm not ready for summer, okay, because मुझे उतना गर्मी भी पसंद नहीं है. But yeah, it's another morning and मैं अपना ये जो planner है ना ये अपडेट कर रही हूँ. आज का to do list क्या क्या है मैं वो अपडेट कर रही हूँ. और सुबह का पानी भी पी रही हूँ. इतना बड़ा ग्लास में पानी डाला है so that you know I can drink more water. तो इस कप का मैं एटलीस्ट दिन में 3 या 4 कप पीने की कोशिश तो कर रही हूँ. So yeah, hope that it you know it goes good because drinking water is really important. Anyways, I'm just going to update my planner and carry on with my day. और आगे क्या क्या होगा मैं you know vlog करने की कोशिश करूँगी. So yeah. Hi guys, I just reached Gangtok, okay? और अभी ना मैं ये 18 लाइन के रोड में चल रही हूँ. और सुबह like you know when I was moving from my house तब तो बारिश नहीं हुआ था. मतलब कल रात बहुत बड़ा बारिश हुआ ना, बहुत ही बड़ा बारिश हुआ. और सुबह like the weather was okay, and it felt like it was not gonna rain. And I was also thinking कि अगर you know like on the way it rains then मैं you know बाज़ार में ही पहुँच के like I'll get a new umbrella. I was thinking and you know on the way बारिश भी आना शुरू हो गया. ठीक है, wow my double chin. But yeah guys, just got a new umbrella. Oh my god, मेरे टैग भी नहीं हटा है वहाँ पे. Where is it? Yeah, टैग भी नहीं हटा है. अभी इसको मैं थोड़ी देर में हटाऊँगी. But yeah, I'm panting a little क्योंकि मैं ऊपर चल रही हूँ ना और इतना बारिश आ रहा है. Oh my god. Green Gangtok.
गुड इवनिंग गाइस। तो अभी ना जैसे कि शाम का कितना 4:30 मतलब 4:30 से थोड़ा सा ऊपर 4:45 जैसा हो रहा है, ठीक है। लाइक आई डिड नॉट नो हाउ टू ट्रांसलेट दैट इन हिंदी। मतलब 4:45 PM हो रहा है। आई जस्ट चेक द टाइम, ओके, एंड आई एम बैक होम। और आज ना मतलब मेरा मेरा पर्सनली कुछ काम नहीं था। किसी मेरे रिलेटिव का कुछ काम था ना, सो आई हैड टू हेल्प देम इन दैट वर्क, ओके। लाइक उनका टाउन में कुछ काम था एंड सो आई हैड टू हेल्प देम। और उसके साथ साथ ना लाइक आई ऑल्सो हैड टू रिसीव सम ऑफ माई ऑनलाइन पैकेजेस। लाइक मैंने लाइक फ्यू डेज अगो आई जस्ट डिड सम शॉपिंग, ओके। मतलब टू बी ऑनेस्ट लास्ट वीक मेरा उतना अच्छा नहीं रहा, ओके। लाइक आई वॉज नॉट really in a very like good mood बोलूँ या मतलब क्या बोलूँ, मतलब I was at a low point in my life, okay। तो अपने आप को ना मतलब खुश करने के लिए आई जस्ट डिड सम रिटेल थेरेपी। तो मैंने ना कुछ स्किन केयर वगैरह मंगवाया, ओके। एंड फ्रॉम दैट ना आई वाज एक्चुअली सपोज टू रिसीव 2 पैकेजेस। एक तो कल ही आ गया था एंड आई इवन रिसीव्ड कॉल फ्रॉम देम, ओके। एंड आई टोल्ड कि आई वोंट बी एबल टू लाइक come like yesterday। तो मैंने बोला कि I'll receive the package tomorrow, which is today, but then today that delivery person did not call me। like I had to call that number। like मैंने कितना 5 या 6 बार कॉल किया बट उन्होंने फ़ोन ही नहीं उठाया, ओके। सो I don't know why, what happened, they have still not reached back to me, so I could not receive that package। but so yeah, I just want to do a little haul for you guys as to what I got, okay। and I ordered some skincare from Nykaa। It's after a very long time that I ordered skincare products from Nykaa, okay। They hit and here's my package। Firstly, okay, here कुछ extra है, okay। I think I also got some freebie क्योंकि जब like when I was finalizing my order ना तो वहाँ पे कुछ freebie करके भी दिखाया हुआ था। so I'm excited for it। let's see क्या होगा। so yeah, I got this sunscreen, and main thing which I wanted to get was this face serum। yeah, because my old one ना जो मैंने couple of times I've showed it in my blog, वो ना ख़त्म होने वाला है। like almost आज शाम तक तो ख़त्म हो भी जाएगा ना। and of course like I could not miss out on this moisturizer। I got this vitamin B5 moisturizer। so yeah, I just ordered these 3 products from Minimalist, okay। let's talk about the freebies which I received, okay। so what is this, okay। first of all, I received this rupees 85 rupees worth का ना मुझे body lotion मिल गया। this is from Nivea and this one I received it for free। so excited to receive free products, है ना। and this one I received, what is this, this is a AHA face peel for instant glow and soft skin, okay। let me just see, okay, क्योंकि ये वाला ऐसा क्या है मुझे भी नहीं मालूम है। let's see कि ये क्या है, ठीक है। okay, what is this, it's kind of like a serum, okay। face peel मतलब इसको चेहरे में लगाकर पील करना है for instant glow and soft skin, okay। yeah, I am very much excited to try my new skincare products। और आने वाले future videos में like I'll give you guys review कि how like these products are, है ना। and yeah, मैं आप लोग को बताऊंगी कि like whether it was good or bad, okay। and yeah, let me show you another thing। this is this I just bought it today। I was planning to buy it, okay। so this is kind of like a storage box and it is from Miniso। it looks like this, let me just open it। तो ये वाला मुझे लेना था because yesterday I just made some arrangement over there, like जहाँ पे मैं अपना स्किन केयर वगैरह रखती हूँ ना। so I just made some changes and I realized that I need like a new storage box, okay।
So yeah, I was really hoping कि मिनीसो में ना ये वाइट वाला हो, because I think I saw this like before last year मैंने देखा था, but I was also a little bit skeptical कि because you know they keep uh, changing their products ना, so I was a little bit scared बोलूँ या skeptical बोलूँ कि whether they will have this or not, but luckily they had. And this one is for 170 rupees. So yeah, I got this from Miniso, and I also got some socks from Miniso. This na ye wala na मैंने last time ही लिया था, but that day I did not vlog, okay. और मैंने सोचा था कि मैं आप लोगों को haul video करते वक्त दिखाऊंगी, and I actually got like 3 pairs, which is black, white and grey one. But grey वाला ना आज पहन के चली गई थी मैं, तो yeah, I just have this 2 socks with me. ये last time का है, okay, but I just wanted to show you. Yeah, that's it for the haul video, and I'll see you guys later. It's night time, like it's around 8 p.m, okay, and after washing my face with cleanser, मैंने ना ये use किया है. This is actually face peel. It's kind of like a face peel. Marks तो नहीं बोल सकते, but it is said that you know it's good for instant glow and soft skin. और इसको ना मतलब in instruction it's written that you can use it in every 2 weeks, okay. So मैंने सोचा कि आज evening में ये इसको use कर देते हैं, and yeah, it's very easy to apply also because of this you know pump thing ना. And yeah, my face looks a bit like yellow because it has actually got that you know yellowish wala color, or kya bolo, I don't know, but it थोड़ा सा ना ऐसा stinging वाला sensation मुझे feel हो रहा है अभी, like it's subsiding a little bit, but then when I first applied it मुझे थोड़ा ना ऐसा कुछ ऐसा prick कर रहा है जैसे feel हो रहा है. I hope it's like for a good reason only, but yeah, abhi isko I have to keep it for the next 10 minutes, and then I'll have to wash my face. So yeah, let's see. First time chala rahi hu minimalist ka face peel mask. So yeah, let's see how it goes.